Hi everyone, welcome back to the TheDiviShow. You're on episode number 14. After 13 successful episodes, we are finally here. We have been covering a lot of textile and F&B sector. So before I give the introduction of our new guest, I just want to lay it down here that I am open to your suggestions. I'm sure there is more to Jaipur than just textile and F&B. And on my Linktree link you can find a guest form where you can fill that form, and I can reach out to you and we can further discuss if you are a good candidate for the show, or you can even suggest people there. So yes, coming back to the guest of our 14th episode, we have Jitesh Madhwani. He and I met at Town Coffee very randomly. He was just going through the collateral that he prepared for his brand, and he was just sitting there and scrolling through, and randomly he just called me and he's like, can you give me like a feedback on this brand? And since I come from the marketing background and the branding background, and I understand brands a lot, we then connected and reconnected later, and we spoke a lot about entrepreneurship at that time, how my startup is going, how in whichever way, in marketing wise or in design wise, I can help him in his brand. When Jitesh told me about his experience over the years, from New York to Indonesia, he has worked everywhere. And in fact, he's a global consultant for marketing and entrepreneurship himself, and there's a lot to learn from the man. He comes from a core F&B background, and from working with crafts in New York, he has given a lot of time in the food industry, and he'll be sharing a lot of insights on that industry. I have heard those stories. I really want you to hear it, so that the next time you open that chips ka packet, that cookie that is healthy and sugar free, he gave me a lot of insights on that. So we'll go and meet him and discuss more about why he ended up launching his product by the name Flavor. He deals in spices and really adding on to a lot of things. They have started kombucha from another brand, they have started herbal teas, and everything. And he promises at Flavor that हम आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं बेचेंगे जो हम अपनी families को ना खिला पाएं. So I think that's a very good philosophy to start on with, and we'll discuss more on this the moment that he is on the passenger seat in the next cut. So see you then. Bye bye. Hi Divisha, how are you doing? Very good. How are you? Very well, thank you. You can pin this first. Yes. So in the introduction, I was just telling everyone about how we first met at Town Coffee, and how we just randomly started talking, and then we met later on as well. Absolutely, and I think you were one of the first few people जिन्होंने हमारा जो video clip देखा था when we were launching. Yes. And that was a very good thing. Now that I think of and I go back, when you were starting, जब आपने जब logo बनाया था and you were going through the entire branding, going to random people and just taking their feedback कि हाँ ये आपको देख के कैसे लग रही है. And I remember my exclusive feedback as well. Yes, I remember that too. Yeah, but ultimately एक रूम में बैठ के कितने भी brilliant team हो, कितने भी अच्छे ideas हो, जब तक मार्केट में टेस्ट नहीं करेंगे तब तक उसकी वैल्यू पता नहीं चलती, और मार्केट ब्रूटल होता है. तो इससे अच्छा है पहले जितने लोगों से बात कर सकें, उनसे फीडबैक लें, whether it's a business plan, visual identity, logos, marketing.
वो अच्छा रहता है. So I keep talking to people I meet. I share my ideas. Yeah. I think ideas के बारे में कभी secretive नहीं होना चाहिए. Yeah, for sure. So my plan is to go back on your journey, and you know what is the foundation, like I've been telling people about the promise that you made on your website, ki we won't sell anything that we can't feed our families. So I'm sure वो foundation आपको बनाने में बहुत time लगा होगा और बहुत toxic market में आपने play किया होगा a role, जिससे आज आप यहाँ पहुँचे हुए हो कि you know you want to start something of your own that is clean and healthy. That's a very good question. Basically, I'm a business and marketing guy. Fortunately, मेरे career की शुरुआत जो है वो food industry से हुई थी. I very early on got the opportunity to work with Kraft Foods in New York. उनका global headquarters उस time पे वहाँ पे था. And they're number 2 in food after Nestle worldwide. Right. तो वहाँ पे food, marketing, business fundamentals, सारी चीज़ें का नॉलेज मिला. नॉलेज तो जैसे MBA में भी मिलता है, लेकिन जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और मार्केटिंग, एज यू नो, इट्स क्रेजी. सबसे पहला चांस मिलते हैं हम बोलेंगे चांद पे बैनर लगाना है, दुनिया देखेगी. एंड देन इट्स कंपनीज लाइक दीज जो कि मतलब 100-150 साल से बिजनेस कर रहे हैं. दे इवॉल्व दीज फ्रेमवर्क्स. उसमें थॉट प्रोसेस जो है वो पूरा, एक तो जंगल में आग लगी हुई है, एक आपकी गाड़ी में इंजन में आग चल रही है. दैट इज प्रोडक्टिव, वन इज डिस्ट्रक्टिव. तो वो वाली थॉट प्रोसेस आ जाती है कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं बिजनेस में, मार्केटिंग में, तो उसको चैनलाइज कैसे करें. प्रैक्टिकल है, नहीं है, फीजिबल है, नहीं है, ROI क्या रहेगा. सो मेनी डिफरेंट क्वेश्चंस. तो वो सारी फंडामेंटल ट्रेनिंग और फूड के बारे में, फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज वहाँ पे मिला. देन आई मूव्ड विद देम टू ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद में बहुत बड़ा एक डिसीजन था. एंटरप्रेन्योरियल बग तो अंदर था ही, और दैट वाज अ टाइम ऑफ अभी करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा. आई वाज इन माय मिड टू लेट 20s. कि अब तो करना ही है. your generation also used to feel कि यार लेट हो रहे हैं लाइफ में, यार this is just a Gen Z millennial thing. If you want to achieve something, you've got to be in a hurry. आराम से तो फिर क्या होगा. तो वो छोड़ा. Fortune 500 जॉब, सैलरी, पर्क्स, बिजनेस क्लास ट्रैवल सब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट किया. इट वाज मी, वन मैन शो, अलोन, अपने स्पेयर बेडरूम में, अपने लैपटॉप पे. धीरे धीरे कंपनी बढ़ी. वी वर गिविंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज. उस टाइम पे बूम पे था. वी वर गिविंग आउटसोर्सिंग सर्विसेज टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स. तो टेक्नोलॉजी आया पिक्चर में. पहले फूड एंड मार्केटिंग था, फिर टेक्नोलॉजी आया. वो कंपनी मैंने सेल कर दी थी. उसके बाद में आई कंटिन्यूड एज एन इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट, वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स, मेनली एडवाइजिंग देम ऑन बिजनेस स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कम्युनिकेशंस, ई-कॉमर्स. और अब ये नया जो वेंचर आपको मैंने शेयर किया था, इसमें एक स्पेशल बात मेरे लिए ये है कि जो मेरा लव है फॉर फूड, फॉर मार्केटिंग, फॉर टेक्नोलॉजी, तीनों कंबाइन हुए हैं. सो और ये भी एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं था. आई वाज हैप्पी विद माय कंसल्टिंग लाइफ. ये नहीं था कि भाई अब नेक्स्ट राउंड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप करना है. बट लॉकडाउन में, व्हाई डिड यू सेल द फर्स्ट वन? It had reached a point where I received an acquisition offer. We had grown to a team of 50 people, doing significant revenues. So वो भी again एक difficult decision था, in the sense that you've nurtured it from it's your own baby. You've nurtured it from being a zero employee, one man show to a team of 50 people. But it made business sense, so I had accepted that acquisition offer. और ये भी जो वेंचर है, अगेन ये कॉन्शियस प्लानिंग के साथ नहीं था कि भाई मुझे शुरू करना है. ये ज़्यादा था कि मेरी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन से आया. जनरली एज ए कंसल्टेंट मैं काफ़ी ट्रैवल करता था इंटरनेशनली. तो जो पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, एडिटिव फ्री, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हम लोग घर पे कंज्यूम करते थे, काफ़ी कुछ ट्रैवल्स में लेके आते थे, घर पे स्टॉक पड़ा रहता था. देन हैपेंड कोविड. कोई ट्रैवल नहीं कर रहा, कहीं से कुछ मंगवा नहीं सकते. तो मैंने अपने पीयर ग्रुप से पूछा, मैंने कहा कि आप लोग कहाँ से मंगवा रहे हो, वेदर इट इज सैफरन ऑफ हाई क्वालिटी या एडिशनल कुछ ये
फूड्स, हर्ब्स, स्नैक्स जो केमिकल फ्री हैं। उन्होंने कहा यार जो मिलता है उसी से गुजारा कर रहे हैं, अदरवाइज ट्रैवल करते हैं, ले आते हैं, नहीं कोई आ रहा होता है मंगवा लेते हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक इन द सेम बोट एज मी। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा लगा कि yes. But what, how, sorry to cut you, like why were Indian products at that time not your like first choice and you wanted to bring it from? इंडिया में है, इंडियन प्रोडक्ट्स सारे कंज्यूम करते हैं, और ये सिर्फ इंडियन प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट्स की बात है कि जो कमर्शियली मिलते हैं प्रोडक्ट्स ज़्यादातर बिकॉज उनको शेल्फ लाइफ भी चाहिए, तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स डलेंगे, और उसमें टेस्ट का एक बूस्ट चाहिए तो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी डलेंगे, फ्लेवर एनहांसर्स भी डलेंगे। हम लोग जो मसाले खरीदते हैं उसमें हम नहीं चाहते कि जैसे गांठ बन जाए बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, लम्प्स नहीं बने, तो उसमें फिर एंटी केकिंग एजेंट्स भी आ जाते हैं। तो वो चीज़ें सारी प्रोडक्ट को विजुअली अच्छा बनाती हैं, टेस्ट में भी शायद अच्छा बनाती हैं, लेकिन अंदर जाके क्या कर रही हैं और लॉन्ग टर्म कंजम्पशन में क्या हो रहा है, वो चीज़ें अवेयरनेस अभी आ रही है, स्पेशली आफ्टर कोविड। लोगों को पता चल रहा है कि वी नीड टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट वी आर ईटिंग। तो उस टाइम पे मैं भी कॉन्शियस था, बट ऑब्वियसली जो सुपरमार्केट्स में मिलता है, सब जगह मिलता है, वो चीज़ें हम भी लेते हैं। ऐसे तो है नहीं कि सब कुछ बाहर से ही, बट हाँ ये है कि जो जो ऑप्शन होता है वो थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि एडिटिव फ्री हो। लेकिन मैंने देखा कि मेरी तरह और भी लोग हैं जो चाहते हैं इस टाइप के प्रोडक्ट्स। इंडिया में उस टाइम पे कोविड जब स्टार्ट हुआ था, 6-8 महीने हुए थे, ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं थे, तो एक अंडर सर्विस्ड मार्केट मुझे दिखा। तो इनिशियल आइडिया था कि लेट्स लॉन्च आवर ओन ब्रांड। उसमें हम लोग स्पाइसेस, हर्ब्स, सीजनिंग्स, स्नैक्स ये लॉन्च करते हैं अकॉर्डिंग टू दैट फिलॉसफी ऑफ प्योर क्लीन ईटिंग। ऑब्वियसली मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट तो हूँ नहीं, मेरे साथ साथ काफ़ी लोगों ने ये भी आइडिया और डेफिनेटली इंडिया वाइड सोचा, और उसी पीरियड में करीब 1 साल 1.5 साल के अंदर इंडिया में करीब 150-200 ब्रांड्स लॉन्च हुई थी फूड्स एंड बेवरेजेस की, जो कि क्लीन लेबल पे फोकस थी। तो अगेन मेरा फिर अंडरस्टैंडिंग ये रहा कि वाई बी वन मोर अमंग्स दोज प्लेयर्स कम्पीट, और रियलिस्टिकली एज अ कंपनी हम लोग अगर बिजनेस स्ट्रैटेजी की भी बात कर रहे हैं तो कितनी कैटेगरीज में हम लोग रियलिस्टिकली कम्पीट कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कम्पीटिंग आई फेल्ट इट इज़ टाइम फॉर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम। सारी ब्रांड्स ऑलरेडी इतना वंडरफुल काम कर रही हैं, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स ला रहे हैं मार्केट में, तो सबको एक साथ लेके एक मूवमेंट बनाते हैं प्योर फूड्स का, जहाँ पे कि वो जो भी मार्केटिंग कर रहे हैं उसके अलावा हम लोग उनको एक एडिशनल प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है, एक ही जगह पे वो आके दे कैन कम इन शॉप नोइंग कि एवरीथिंग इज क्लीन लेबल एंड प्योर। जैसे आप देखेंगे इंडिया में या इवन वर्ल्ड वाइड परचेस करना है तो सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? अमेज़ॉन। लेकिन अगर आपको इंडिया में से फैशन खरीदना है, आप अमेज़ॉन पे नहीं जाओगे, मोस्ट लाइकली मिंत्रा पे जाओगे। कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर, आप कहाँ जाओगे? नायका। फूड के लिए भी बहुत सारे हैं, अमेज़ॉन पे भी मिलता है और खूब सारे और हैं प्लेटफॉर्म्स। लेकिन आप अगर देखें कि प्योर एडिटिव फ्री फूड्स, मल्टीपल ब्रांड्स जो कि नेशन वाइड सर्विस मिल रही है, वो अब तक कोई नहीं कर रहा था। सो दैट इज द गैप वी हैव फिल्ड। ओके। तो अभी ऑलरेडी मतलब कुछ महीने ही हुए हैं, लेकिन नेशन वाइड जो हमारी कैटेगरी लीडिंग ब्रांड्स हैं, जैसे कि शिमी आपने मेंशन किया, ब्लू नेक्टर, सेवरल अदर ब्रांड्स हैव जॉइंड अस, दे आर सेलिंग थ्रू अस। कस्टमर फीडबैक भी बहुत अच्छा है, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। And how do you choose these brands? I'm sure you have a lot of knowledge behind reading the labels, going through the ingredients, and I'm sure you would, you know, have a thorough check on these brands कि ये कुछ गलत तो नहीं कर रही. So what, as a conscious founder, how do you know pave your path कि ये सही brand है, okay let's onboard this? उसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ हर स्टेज पे ऑनबोर्डिंग की, राइट फ्रॉम शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन, प्रोडक्ट क्यूरेशन। सबसे अच्छी बात हमारे इंडियन लॉज की ये है कि ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रिजर्वेटिव्स और वो सारी चीज़ें जो लीगली अलाउड हैं सर्टेन क्वांटिटीज़ में, लेकिन
उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है लेबल पे. So this doesn't happen in other countries? It happens in every other country, but India has one of the most stringent laws. जो FSSAI laws हैं, they are very stringent. और साथ में अगर वो तो उसमें ingredient label पे तो जो लिखा है, along with that जो भी वो claims कर रहे हैं. For example, somebody says कि उनके products organic हैं. So we check all their certifications. We make sure that they remain valid. ये नहीं है कि भी आज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है, 6 महीने बाद जो लॉट आ रहा है वो क्या है. So we constantly make sure their certifications are updated and filed with us. For any organic brand, can you mention a few certificates that they should? There's Organic India plus US FDA से भी organic certification होता है, international bodies भी हैं. So कब renew होते हैं ये? Basically तो इनका constant checking होती रहती है. Audits होते रहते हैं. So they can like randomly send someone to check. Yes, वो सारे provisions होते हैं कि जाके officials उनके license renewal से पहले plus random level पे भी checking करते हैं. और साथ में हम लोग भी जो brands हमारे साथ जुड़े हुए हैं, certifications हैं, फिर भी हम लोग खुद blind orders प्लेस करते हैं थ्रू आवर फ्रेंड्स और थ्रू आवर एम्प्लॉइज एड्रेस. प्रोडक्ट मंगा के एट रैंडम पीरियड्स ऑफ टाइम उनको हम लोग भी लैब टेस्टिंग कराते हैं. नो डाउट इट इज़ एन एक्सपेंसिव थिंग, लेकिन कस्टमर्स जो हमारे अंदर जो ट्रस्ट रख रहे हैं, एट द सेम टाइम जो हमारा जो बिजनेस फिलॉसफी था, दैट वाज टू डू इट एथिकली. सो to maintain that, I think it is important to invest in random checking time to time as well. I've been meaning to ask you about the sabbatical that you took as well. Yeah. And that you have proudly also mentioned on your LinkedIn, which a lot of people would not do, but it was a great thing. I mean, you know, you were given the links as well, you know, what all you did, and that was in fact productive only, I'm sure. But how was that like? Can you please give some tips to people who are hustlers and need like a break in their life? Well, I think the break is required. You need to recharge. You need to cool down and reboot. तो मैं उस टाइम पे इंडोनेशिया में था. I was working with a company called Comly. It's one of the, at that time it was one of the leading digital marketing agencies. वो acquisition हो गया उसका. Then so I came back to India. But यही था कि I've been working for so long, so many you know hustles here and there. तो अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है, फैमिली के लिए भी, पर्सनल इंटरेस्ट भी. तो मुझे फोटोग्राफी का शौक है. यूजुअली ट्रैवल भी करता हूँ तो कैमरा तो साथ होता ही है. तो मैंने कहा कि व्हाई नॉट डू इट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड. ये नहीं था कि कॉन्शियसली कि 1 साल ट्रैवल करना है, बट हाँ ये था कि फॉर अ व्हाइल until I figure out what to do next. तो उसमें यही था, कैमरा लेके कभी वीकेंड ट्रिप्स, कभी 2 week ट्रिप्स, कभी सोलो, कभी ग्रुप्स के साथ, कभी फैमिली के साथ. तो बस वही चलता रहा. And then I was like, okay, this is good enough. I've given it 1 year, explored myself, explored the world even more. और अभी I think I have recharged myself. Let me get back to life. But I think that was a conscious decision to take a break and a conscious decision to come back. But वो सबको करना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ. Yeah. And what happened when you came back then? You changed? When I came back, I moved back into the consulting. But obviously एक ये रहा कि when you're continuously involved in work, एक टारगेट, एक डेडलाइन, you're working like a machine. एक बार अगर जैसे ये कनेक्ट हो जाता है with yourself and you're doing stuff you've enjoyed, then you kind of put life in perspective. कि ठीक है, ये सब कर रहे हैं, we're running around, we're creating these products and campaigns and whatnot. Objective क्या है? What do you want to do at the end of the day? And that answer, it becomes very clear, you know, when you spend time with yourself and your family, is that, you know, at the end of the day you want to actually unwind, maybe a glass of scotch or a green tea, watch a movie with your family, or just, you know, go hiking or anything, those things which really give you joy.
So I mean, with this startup, I've really been again working 18-hour days, but I mean that's required for anything new. Yeah. But yes. You're planning a trip very soon? I just before I did the launch, we went for a small family vacation to Seychelles. Yeah. तो अभी फिलहाल नहीं, नेक्स्ट 6 महीने वेकेशन का सोच भी नहीं सकते, थोड़ा सा एक बार और हमारा आइडिया ब्लॉसम करे, उसके बाद में डेफिनेटली रिवॉर्ड बनता है. मैंने काफी एंटरप्रेन्योर्स से ट्रैवल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही है, बिकॉज आई फील दैट्स अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ पीपल हु want to see life with a different perspective and want to bring out their creativity and learn something. You're absolutely right. It opens up the mind. Yeah, for sure. आप कहीं पे कुछ भी आप, if you can afford it, you can buy anything anywhere. आप यहाँ बैठे आप दुनिया का कुछ भी मंगवा सकते हो. But what you don't get is experiences with people. Yeah. और वहाँ का स्ट्रीट फूड, ऑथेंटिक वाला. Yeah. चाइनीज़ फूड जैसे हम लोग हर जगह खा सकते हैं, लेकिन आप जो बीजिंग पे जो फूड कार्ट पे जो रोड साइड खाओगे, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो वहीं पे मिलेगा. So to know people, to know culture and cuisine, traveling is a must. And indirectly उसका ये result होता है, knowing all of these, you get to know yourself also. Yeah, that's true. And your preferences also. Yes. What's like which of all these places that you have visited, किसका culture सबसे ज़्यादा intriguing लगा? So many. I've been to more than 35 countries. सबका unique culture है, सब लोग friendly हैं अपने अपने तरीके से. Friendliest लोग मुझे मिले नेदरलैंड्स में और वियतनाम में. और वियतनाम में तो ऐसे कि हम लोग कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे थे. अच्छा. उनको इंग्लिश नहीं आती, हमें वियतनामीज नहीं आती. ट्रेन कंपार्टमेंट शेयर किया था एंड हमने उनसे हेल्प भी नहीं मांगी. हम लोग वहाँ से निकले रेलवे स्टेशन से, टैक्सी वाले से विदाउट नोइंग द लैंग्वेज नेगोशिएट कर रहे थे. एंड द जेंटलमैन कम्स अप, साइन लैंग्वेज में बात हुई, उन्होंने पूछा कहाँ जाना है, हमने बताया यहाँ जाना है. ही नेगोशिएटेड ऑन आवर बिहाफ. ही टोल्ड अस इतना देना है एंड वी गॉट इन. एंड without exchanging a word, without knowing a word of each other's language, he offered his help. We accepted, we thanked him, and it was a wonderful experience. Wow. Wonderful. Something about working in like travel would have impacted a lot of spheres in your entrepreneurial journey. How has MNC pushed you? Because a lot of people, they are not working now, they directly either want to, even after doing 2-3 internships or some other, and some are getting successful also. Yes. They have a lot of examples of people who are 18, 19 and earning a lot business wise. Yes. But coming from your background, how did you what lessons did you learn MNC में काम करने के बाद? कैसे आपके processes refine हुए? What all did you learn and how is that helpful? Like I gave you that example, जंगल में आग लग रही है, एक आपकी गाड़ी के इंजन के अंदर भी आग है. One is destructive, the other is productive. Difference सिर्फ यही है कि वो fire contained है, उसके अराउंड एक फ्रेमवर्क बना हुआ है. MNCs में सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि उनके सिस्टम्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस इतने वेल डिफाइंड होते हैं, और वो आप और हम एक बार में बैठ के नहीं बना सकते, बिकॉज these things evolve over decades and centuries. Best practices change. उन companies ने over the centuries, over the decades, over the years, depending on how old the company is, but they've invested in creating those systems and policies and procedures, SOPs, best practices. तो वो चीज़ सीखने का जो मज़ा है, और उस मज़ा बाद में आता है. पहले तो फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, ये भी कंप्लायंस करना है, ये भी फॉर्म टिक करना है, ये भी करना है. But the procedures, so many things, it seems bureaucratic. But then when you actually go into entrepreneurship equipped with that line of thought, आप एक डिसिप्लिन के साथ ज़्यादा प्रिडिक्टेबल काम कर सकते हो. तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा रहा लर्निंग. वो आज भी जो चीज़ें सीखी हैं, जो मेटिकुलस डिटेल थिंकिंग में चाहिए होता है, वो आज भी अप्लाई होता है. इनफैक्ट यू मेड अ वेरी गुड पॉइंट ऑल्सो, जो
काफ़ी स्टार्टअप्स हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स मे बी स्टिल इन कॉलेज जो ड्रॉप आउट्स या ज़्यादा कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, दे डूइंग ग्रेट वर्क. सो आई ऑल्सो मेंटर अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स. तो उसमें इस टाइप के काफ़ी लोगों के साथ मैं काम करता हूँ. इट्स माई वे ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी बिकॉज मेरी करियर जर्नी में भी मुझे मेंटर्स मिले, गाइड्स मिले, एडवाइजर्स मिले. रियली थैंकफुल फॉर देम एंड वही चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ. तो काफ़ी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनके पास ब्रिलियंट आइडिया है, टेक्निकली ब्रिलियंट हैं वो लोग, लेकिन प्रैक्टिकल बिजनेस एक्सपीरियंस नहीं है. वो एक ग्रेविटास नहीं है कि एक बोर्ड के सामने खड़ा होकर अपने आइडिया को पिच करें एंड बी टेकन सीरियसली. So I work with them to articulate their business strategy, their vision, और founders के साथ personal level पे भी उनको वो थोड़ा सा एक soft skills and grooming, which is required, क्योंकि ultimately आपको तो VC के board के सामने खड़ा होकर बात करना है. उन्हीं की terminology में, no matter आपका product और market कितना बढ़िया match कर रहा है और कितना अच्छा potential है. So that's sort of connecting those two ends, which I also work with. That's a big help, I think, for people who are just starting off with no background. Happy to do my bit because the world is round. I've received fantastic help during my career, and it's just my way of giving back. Nice. I feel when you talk about giving back also, people who come to you, they can understand much more from a human experience than going through all the 20 years of your corporate life. That's why maybe a lot of youngsters love to watch two people talking like a show or a podcast, because they get to learn so much more than any textbook knowledge or so I think getting a consultant or a mentor at this stage when people are starting their business, I think that would be a really big help. No, I mean your show, the format itself is so conducive towards that. A formal interview, you think of questions, you ask questions, and that's it. I mean, in a conversation, neither of us knew. हम लोग जब car में, when I sat down with you, conversation कहाँ जाएगी? It's sort of evolved from one point to the other. Sure. उससे जो insights निकल के आते हैं, people watching also, people who seek to gain from that, it's much more valuable than a textbook or a formal interview. For sure. I only prepped, I think, questions for 1 or 2 interviews at max, but otherwise, it just comes with a flow. It's my curiosity that, exactly. I'm very curious about knowing these things. So I don't need like a pamphlet in hand or something or the other. Oh, nice. That's brilliant. Yes, let's talk about flavor. Why flavor, and what are your plans now with it? So, why flavor? I explained the business rationale behind it, in the sense that it's a very underserviced market. People consciously are looking for pure foods, additive-free foods. अभी options भी उनके पास हैं, but हम एक ecosystem create कर रहे हैं जो कि वो सारे options एक जगह collect करके. For example, if you need to buy Blue Nectar tea, and you need to buy honey as well, which you want to be able to trust the quality. If you buy it from the same place, it's just easier for you as well. You're able to, as a customer, see the compatible products. You know that every product has been curated, has been tested. So for a customer, that's the experience we want to give. Are you planning to get into staples as well? We're not consciously looking to position ourselves as a grocery brand, right? But more of a food experience. So हमारा जो company का जो vision है, that is to enhance the way India discovers and experiences flavor. So it's really about that indulgence, that whether it's a snack food or a health food or anything, but it's we're not really focused on the atta dals, but more on that wow flavor. And flavor doesn't have to be sinful. It doesn't have to be unhealthy. Right. That's so true. I remember we were talking about a few stories from back in the day when you were talking about how a cookie that is healthy is like laid in a layer of oil, and then
Yeah, I mean, these are food would industry. love to, I really wanted people to hear this on this interview that, whatever products people are buying so unconsciously, this is healthy, it's healthy. Well, that's the thing. I mean, it's important to read the labels. Yeah. Low fat, maybe it's high in sugar or high in salt. Low sodium, maybe it's loaded with carbs. So when you take something out of a system, out of a recipe, out of any device, you need to put something in to compensate for that. Yeah. Right? So when you talk about less sugar, then you're putting in alternatives. Yeah. You need to give taste, right? I mean, that's what the food industry is about. It's about taste. If you take away one element, you need to compensate with something else. So we can never really know. I mean, if you talk about chips, you have a lot of baked variety of chips now. Yeah. So they can say on the package, baked, not fried. Yeah. Oh yes, we were Right. talking about this. That was the one you. And at the same time, they'll bake it and then they'll put it in a layer of oil. It gets sprayed with oil or gets dipped in oil. Yeah. But it's not hot oil. It's normal room temperature oil. Yeah. But they do that because that any chips you eat, it's got that flavor on the surface. Yeah. The moment you put it on your palate, you get that burst of flavor. Yeah. That powdered flavor is not going to stick to it without oil. So even if you bake it and then you spray it with oil, you can say it's baked, not fried, but probably has the same amount of oil. Oh man, it still blows my mind. I mean, these are the things, having seen firsthand, with the companies I've worked for, they make great products, of course, but then that's the way the industry is. And they are gravitating towards healthier options. Like a lot of food companies I've been a consultant with as well, they are also consciously gravitating towards lower sodium versions. But the evolution does take time. A lot of these startups which we work with right now, these new brands which have come, because they don't have any legacy tastes to conform to, they can just make whatever they want. आज अगर आप एक particular brand of chips खा रहे हो, आप चाहते हो कि जो आपने 10 साल पहले, 20 साल पहले जो बचपन में जब first time वो खाया था और खाते आए हो, वही taste आना चाहिए. You expect that of them. नई चीज है, you have an open mind because you don't have a point of reference. ये brand का तो taste ऐसा होना चाहिए. So a lot of these new brands have come up, different flavor profiles, different products, different categories, और बहुत अच्छा मिल रहा है. जैसे one of our brands which is showcased on the platform, they make hot sauces. Yeah. Right, El Diablo. They're again additive free, no thickeners, none of the other ingredients. And they launched India's very first bacon hot sauce. It actually contains bacon. Okay. Wow. Now, that's a taste you would not have expected, right? Yeah. But they can experiment. They can experiment. They have experimented and they don't have to conform to anything. Yeah, you can't see a Kisan or a Maggi doing that in India for sure. They might make a variant, but ultimately their core product would have to be what it's been forever. Yeah, That change, even Coca-Cola, there's a case study, I think it was sometime in the 80s, they came out with New Coke. They changed their formulation for the first time ever. Okay. It was a big flop. Even though it may have been better, but it's just not what people expected. So they had to go back to the old one. Right. I've experienced this with Maggi after after they've taken out its lead. It's like the product has flopped. It was actually the taste of the lead that we were cherishing all our lives. It's like dhaba food. Yeah. No matter where in the world you are, the finest of restaurants cannot replicate that. Simply because of the environment, the components, everything. I mean, dhaba food, you will only have to eat in that grimy roadside dhaba to get that taste.
For sure. Maggie has totally changed, and it's been like ages I haven't had it, and that was possibly after they took out lead from it, so that's sad. Maybe you can get a version of flavor noodles or... That's actually a good product idea. Yeah. That's one of the advantages we have. Any product we need to showcase on the platform, कोई ना कोई company बना रही है India में. And they're doing it ethically. They're these small players. They have beautiful products, beautiful packaging and marketing, but small scale पे कर रहे हैं. उनके पास वो MNC backing नहीं है अभी. We are getting those kinds of brands and showcasing them as well. उसमें नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जनरली 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है. फॉर्मुलेशंस ट्राई करोगे, लीगल कंप्लायंस, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशंस, पैकेजिंग, सो ऑन सो फोर्थ, टेस्टिंग. हमें एक्सपैंड करने में we just have to think of a product and find who's making it. Today if I want to have a brand of coffee, हम लोग अभी कॉफी नहीं सेल कर रहे हैं. I can make 5 phone calls. Maybe by the end of the week, I'll have one vendor final 20 products listed. So, how can brands get in touch with you also? They can contact us through our website flvr.in. And do you have like a commission-based model, or how do you work with other brands? Yes. So we are a risk-free way for them to sell, in the sense that कोई sign-up fees नहीं है, कोई listing fees नहीं है. Generally, marketplaces they tend to charge for the brands to just get listed. I feel that is not sustainable long term के लिए. और अगर आप वहीं से कमाना चाह रहे हो, that means आप अपने platform पे भी confident नहीं हो. We don't charge anything, but yes, we have very stringent quality control in terms of कौन से brands, कौन से products हमारी site पे आएंगे. We work on a commission model. And it's drop shipping as well, which means warehousing. We don't have to bother with warehousing, but at the same time our brands also benefit. आज अगर उनके 100 cartons हमारे पास पड़े हुए हैं, जब तक हम सेल कर रहे हैं दिल्ली में अभी डिमांड कम है, चेन्नई में ज़्यादा है. उनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, बट माल तो हमारे पास पड़ा हुआ है. They cannot send it to Chennai. So they remain in total control of their inventory. और जैसे ऑर्डर आता है they can ship it out. और उनके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज ये है डेटा. डेटा इज द न्यू ऑयल, they say. For sure. Right. Amazon पे अगर आप सेल कर रहे हो या और एनी अदर बिग मार्केट प्लेस, आपको कस्टमर डेटा नहीं मिलता. यू डोंट नो हु यू आर सेलिंग टू, स्पेशली अगर जैसे वो फुलफिल्ड बाय दैट प्लेटफॉर्म है. We are ethical and transparent in our products and in our business practices as well, which means जो भी ऑर्डर आता है, customer name, address, contact details, हम लोग brands को forward करते हैं. Wow. So they can get to know what they should be able to know what demographics they are selling to, what regions, what products, कौन से combinations work कर रहे हैं. Ultimately, if the brands win, we win. As a platform, our job is to connect those fantastic brands with people who are looking for them. Wow. दोनों ends खुश हैं, we are automatically going to be happy. If I start, charging fees here, charging fees there, sure we'll make a little more money in the short run, but it's not the experience we're after. That's wonderful. Thank you. I feel what you're doing is, I'm sure it's going to be such good results in the coming future, because this kind of product is like demanded all across the nation now, and doing this post COVID, I feel it's going to. I'm just waiting for these products to shoot on your website, and wishing you all the growth, all the prosperity with flavor. And I hope this interview helps you in reaching out to your target customer or your brands.
Thank you so much. Thank you. I really appreciate the opportunity to chat with you and to be a part of your show. And all the best for your new show, for your Big Flex marketing agency as well. Yeah, I need a lot of it for that. Thank you so much. Thank you. See you in the next episode, guys. Bye-bye. It was a wonderful conversation with Jitesh, giving him all the luck, sending him all the opportunities his way. The fact that he'll act as a shield and select the kind of products that will be listed on his website and his under his brand name is what gives me the confidence to definitely purchase something from Flavor. I've already tried their spices. I'm yet to try the other brands. So yes, I feel you can also take the first step in helping an entrepreneur by after listening to his philosophy. I think you should definitely try the products by yourself. They come with a promise, and it's almost fascinating to see him work towards a better, healthier future, the one that we for sure want to give our children, our family. So stay tuned. I'll meet you in the next episode. A lot of these planned up for you. In our leaving remarks with Jitesh, he literally told me that your passion speaks in the videos and when you're taking the interview. I hope you guys also see that and support me. यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो के तो सब्सक्राइब ज़रूर करना. See you guys in the next episode. Bye bye.